The Gujarat government has ordered probe into cough syrups. This is important information coming in as this comes after child deaths in Madhya Pradesh as well as Rajasthan. Remember, NDTV has been tracking the story from the ground for you. Now, the Gujarat government has asked to check for harmful ingredients in syrups. Important to understand that the Gujarat Health Minister has spoken on this and said that there will be a probe over harmful ingredients present in all cough syrups currently sold in Gujarat. Important information coming in as, like I mentioned, this comes amid reports of children allegedly dying from contaminated cough syrups in Madhya Pradesh as well as Rajasthan. The Gujarat government has ordered an investigation to determine if the syrups sold in the state contain harmful ingredients. The Gujarat Health Minister, like I mentioned, Patel, has spoken on this and said that as a precaution, the government has ordered an investigation to determine whether these harmful ingredients are present in all cough syrups sold in Gujarat currently. Listen into what राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथाप्रोन और मध्य प्रदेश के अंदर श्रेसान कफ सिरप, श्रेसान कंपनी का कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के द्वारा ऐसे मृत्यु पाए गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। राज्य सरकार में इसी बात का संज्ञान लेते हुए आरोग्य विभाग ने सूचनाएं जारी की है और साथ में ये भी पता किया कि इस कंपनी की कोई दवा हमारे GMSCL के द्वारा सरकार द्वारा खरीदी जाती है कि नहीं जाती है, उसमें ये दोनों कंपनी हमारे बायर लिस्ट में नहीं है। लेकिन एहतियात बरतते हुए कफ सिरप के अंदर जितने भी कफ सिरप है, इसमें जो पाए गए कंटेंट से, मॉलिक्यूल से इस प्रकार की दवाएं है कि नहीं, उसकी भी तपास, उसकी जांच करने के आदेश दे दिए।